228 سر. کس پیج جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی جناب آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے پڑھیے. 228 پر جناب ہے. جی جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swansream versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر, کلیئر کریں. پڑھ لیا آپ, اچھا پڑھتے رہیے. On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. جی سر. ابھی تو ادھر تو کوئی آپ نے نہیں بات کی. نہیں, اس میں تو بات یہ کہی نا کہ آگے پڑھ لیتے ہیں. آگے پڑھ رہے ہیں. On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, is tarah to hamari 2 saal ki mehnat zaya ho jayegi. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? یعنی جس میں آپ آ کے ججز کو کہیں کہ یہ فیصلہ کرو, یہ فیصلہ نہ کرو. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? اوپر کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے. Please proceed. Okay, got it. جی سر. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views?
हाँ, मतलब other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, "Sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan." I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice صدیقی is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Enver Khankasi, CJ IHC, was approached at Quetta through a common friend, where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Showkत Siddiqui. Justice Kaazi, in reply, informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kaazi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? ये इसमें informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो मतलब वो बता रहे हैं. Who's वो? Justice Kaazi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, sorry. Then he is saying that Chief Justice Kaazi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved. Yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that
General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पर अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी जी, बेसिकली कि ये ना बैठे, किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अच्छा आगे पढ़ें क्योंकि उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर। चलिए। He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है। अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस, देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी, ये आपका केस है। चलें आगे पढ़िए। Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. From उस अपील का क्या बना? ये जो अपीलें थी उसका क्या बना, रिजल्ट क्या है? इसमें ये जो अपील्स थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ, वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड करें ना। नहीं, वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई, हाँ जी जी, क्या बना उसका? डिसाइड तो कन्विक्शन को हो चुकी और आप एनहांस। आई डिड नॉट फॉलो सर, आई डिड नॉट। ये जो आप अपील्स की बात कर रहे हैं कि अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिक्र हो रहा है, उस उन अपील्स का क्या बना? अभी रिसेंटली वो डिसाइड हुई हैं अपील्स, रिसेंटली जी अपील्स तो अभी डिसाइड हुई हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला? अब तो कंक्लूजन होगी। नतीजा क्या निकला? नतीजा अब तो वो सेट साइड हो गई हैं कन्विक्शंस। ये वही अपीलें हैं जो पिछले दिनों डिसाइड हुई हैं बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ चलिए वो हम उस पर नहीं बात करें, कल को हमारे पास कोई केस ना आ जाए। तो आगे पढ़िए। जी जी सही है। From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining कि मैंने ये बातें क्यों कही. There are other instances where I have been first-hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. एक चीज देखिए, हर लफ्ज जो होता है ना, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया जाता है बहुत उसकी अहमियत होती है. स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन, अब आपने लफ्ज स्पॉन्सर्ड इस्तेमाल जब किया तो बताइए किसने स्पॉन्सर किया. देखिए आप एक लफ्ज ऐसे फेंक दें तो उस पर ये तो आप अपनी राय दे रहे हैं. अगर आपका इल्म है तो बात कीजिए, हाँ इसने किया. इल्म नहीं है तो फिर लफ्ज ना इस्तेमाल करें स्पॉन्सर्ड का. तो कौन सी हम बात समझें इससे? ये तो इम्प्रेशन कैरी कर रहे हैं. हाँ ये तो इम्प्रेशन कैरी किया है कि जो लोग दबाव डाल रहे हैं इन्होंने स्पॉन्सर. देखें यही बात होती है, वो लोग, ये लोग, एस्टेब्लिशमेंट. अब आपने लिखा है ड्यूरिंग द स्पॉन्सर्ड फैजाबाद सिट इन. हाँ, स्पॉन्सर किसने किया? अगर पता है तो कहें या बोले मुझे नहीं पता है. जी अभी पूछ लें, लफ्ज इस्तेमाल किया स्पॉन्सर्ड आपने लिखा है ना. जी जी
सर जिनके बारे में आप आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप इनको बताएं ना अपने वकील को। जजमेंट भी दे चुके हैं, वैसे वही ISC वाले। देखिए जनाब ने भी जो जजमेंट दी थी, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, 2019 आपसे हम पूछ रहे हैं, पिटिशन आपकी है, आप जजमेंट का हवाला ना दीजिए। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड या आप कहें कि मुझे पता है या कहें मुझे नहीं पता है, या मैंने ऐसी अंदाजा लगा लिया है। एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ दूं ना? चलें पढ़िए। मैं पढ़ दूं। कहाँ पर है? हाँ, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. यहाँ में रुक जाइए, certain orders बताइए ना, किस नौयत के ऑर्डर, किसने इन्फ्लुएंस किया? इन्होंने पहली बात कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी बात वो ऑर्डर की नौयत क्या चाहते थे, ये ऑर्डर कर दो वो ऑर्डर कर दो, फिर बताइए ना, पूरी बात कहें, क्योंकि इससे फिर हमें समझ नहीं आ रही क्या बात है। पूरा पढ़ दूं ना? चलिए पढ़िए आगे। फिर उसके बाद अच्छा, not once, but not Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies, as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. क्योंकि ये जो दो क्या मतलब है, वो ये भी हो सकता है, अच्छा ये जो केस है ना, इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी तो हो गया ना, नहीं ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दें, ये भी ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में, बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं, इस जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए, 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना। जी सर, आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बात बढ़ाएं, बता तो देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। मैं अर्ज करता हूँ, वो बताए ना, किस आप पूछ के बता देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। क्योंकि वो केस भी मैंने कंडक्ट किया था, मैं गुजारिश कर देता हूँ, 2 रेफरेंसेस जिनका जिक्र मैंने कल किया है ना आपके सामने। रेफरेंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही, आप जब जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर क्या चाहते थे, किस तरह के, कौन चाहता था और किस तरह के ऑर्डर चाहते थे? ऑर्डर ये नहीं चाहते थे कि ये ऑर्डर करें कि जी सड़कें साफ कर दें और आप लोगों को गुजरने का मौका दें, ये वो 2 रेफरेंसेस हैं, अगर वो पढ़ लिए जाए। यहाँ तो वजाहत से नहीं की, लेकिन एक मौका आपके पास है, वो कमीशन बना है, आप वहाँ वजाहत दे सकते हैं। नहीं किए, ऑर्डर नहीं पास किए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कुछ बातें ओपनली रेफरेंस। आगे पढ़े जी। Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labag Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only अब आपने देखें अब्दुल कादिर मेमन साहब का इसमें जिक्र किया आपकी लिस्ट में, इसमें तो नाम नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये शोएब शेख का नाम नहीं है इसमें, तो हम जरा देखिए एक चीज को, या मुख्तसर कहीं तो आप बहुत फैला देते हैं, कहीं आप बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। हाई कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में डिसमिस हुआ था। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? इसमें हाई कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी जिसके नतीजे में ये सारी चीज सामने आई। यानी उसका आपसे ताल्लुक नहीं है?
हाँ। इस केस से ताल्लुक हम सिर्फ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा वाकया हुआ था। जी जी, चलिए आगे चले। नहीं तो एक सेकंड, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें, मुझे बताइए। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए देखिए जिनको हमने पार्टी बनाया है क्यों बनाया। पहली बात, आप सबने सिर्फ एक शख्स का पूछा, 1 by 1 चलते ना। हम आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा। तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ। नहीं, लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते हैं कि हाँ मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा। देखिए बिला वजह अब लोगों को नोटिस नहीं देते हैं, कम से कम अब डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना। इस मौके पे तो आपका एलिगेशन है, सपोज कल मेरा सेक्रेटरी, मेरा स्टेनो, मेरा फलां ये उधर बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा है, पता नहीं वो, आप प्लीज देखें ना, ये ना करें खान साहब सर। कैसे नहीं देखें, हम ये नहीं सुनेंगे बात। चलिए आप करना चाहें बहस कर लें, फिर खान साहब को बिठवा दें। जी 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 फरमाइए। फिर कल को कोई कह दे कि जी वो उन्होंने ये कहा है, फलां का है, धमाका का है, पता नहीं लोगों